DSRF, who are the partner to it, and the medical wing of the Brahma Kumaris. Also, let me thank the um, chairpersons for taking time of a busy schedule and encouraging our young medical minds to be a part of these kind of programs which enhances resilience of an individual, especially the medical fraternity. And these resident doctors, they are on the cusp of a very bright future ahead. I would like to thank Dr. Shuchi Jain, Dr. Anuja for taking time to be a part of this. And your presence definitely encourage the young minds that at this stage and stature, you are, you understand the importance of these kind of mental health sessions, which otherwise is ignored by these resident doctors because they are so held up with so much of responsibilities and activities. I also would like to thank the conveners of today's program, Dr. Alka, Dr. Aarti, again for being a part of this particular initiative. Thanks to the coordinators, Dr. Lekhi, Dr. Sejal, for that sweet introduction. Let me start this particular session with a little, I would like to show some videos. Sorry, just a second. Let me, not video, I love to show a presentation. Yeah. You are able to see my presentation? Shubhada Ben, आप देख सकते हैं? Yes, yes. Wonderful. Yes. So my dear students, how many students are here in this today's program? Dr. Lakshmi, if you can ask the participants how many, or maybe you can raise your hand or you can write it in the chat so that we can have a rough understanding of how many resident doctors present, because they are the beneficiary for today's program. Okay. How many of them are there? Okay. Okay. Let me check the chat. Oh, there is only one RJ. ठीक है ना? ठीक. Okay. और भी कोई स्टूडेंट्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं आज के प्रोग्राम में? प्लीज अपने आप को आइडेंटिफाई करें so that I know. Okay, 2 people. Okay. Anyone else? Okay, let's start. No issues. So my dear friends, today's session, I want to make it little interactive. I wish this could have been an offline program because I want to bombard you with a lot of information, which is a blend of science and spirituality. We may not have a lot of time to interact, but let's see. Today's topic is a very interesting topic. The first time I, saw this particular topic, I was little excited as to how am I going to present this being a non-medical guy. But please bear with me in case if I drift to something else. Please correct me also. So MindRx mental prescription for peak performance. Friends, the most difficult cleaning that is the most difficult one in this entire world is cleaning your own mind. Am I right? Am I right? Yeah. You all agree. अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल क्वेश्चन, आपके घर की सफाई दिन में कितने बार होती है? How many times your house is cleaned? Maybe once or twice a day. Okay. Last, maybe today evening. Question number 2. How many times do we clean our body? स्नान कितने बार करते हैं? फ्रेश कितने बार होते हैं? Once or twice. आज लास्ट कब किया होगा? Maybe आज शाम को या maybe in the morning. Okay. प्रश्न, लास्ट हमने अपने मन की सफाई कब की? This is a little challenge. और मन की सफाई is not watching Netflix. मन की सफाई is not reading books. मन की सफाई is not going to a temple. मन की सफाई is
Maybe to some extent is just not listening to a music. Maybe listening to a music will relax you, but it doesn't clean the mind of all that is not okay in your mind. Anyway, so we will try to understand few things. कैसे हम अपने peak performance को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि as resident doctors I know you are very hard pressed for time, you have to do a lot of things. So if I ask you a question, if you have to paint the canvas of your life, yeah, अच्छा बनाना चाहते हैं, चित्र बनाना चाहते हैं, so let's start painting. So my first question is, what's your canvas, what is the brush, and what are the colors and shades? So I have asked you three questions. Number one, जीवन रूपी कैनवस को अगर पेंट करना है तो प्रश्न नंबर एक, कैनवस क्या है, ब्रश क्या है, और कलर्स और शेड क्या है? कोई बता सकता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी. अच्छा, सेजल इज ऑल्सो, ओ डॉक्टर सेजल, डॉक्टर मेघा, ये सब हमारे रेसिडेंट डॉक्टर हैं. हाँ बताइए भाई, तीन क्वेश्चन है, तीनों का आंसर एक साथ लिखिए. कैनवस क्या है, ब्रश क्या है, कलर्स या शेड्स क्या है? They can raise their hand and we can unmute them. Oh please, I'll be very happy if I can hear your Yes, sweet yes. voices. So they can raise their hands. Yeah. कुछ लोग शुभदा बहन बोल रहे हैं टकलू, वैसे ही सारा दिन लोगों का उत्तर दे दे के थक गए हैं, सोचा था एटलीस्ट तुम्हारा सेशन में एंजॉय करेंगे, यहाँ भी तुम प्रश्न पूछ रहे हो. या एक ओके, दैट्स फाइन, ठीक है. So I'll answer it, ठीक है. The answer goes like this. Oh, before we take that answer, there's a very beautiful harsh reality, and I think we're all victims of this. It goes like this, and I want you to read it in your mind. We are all born so beautiful. Now this is the reality, but the tragedy or the harsh reality is, the greatest tragedy is being convinced we are not. And that's where we are not able to tap the inner potential which we are born with, which we are endowed with, which comes to us so naturally and easily. But since birth and today, whatever we are, maybe in the drivenness to lead a very beautiful life, we have acquired a lot of negativity and a lot of other things. So the canvas, my dear wonderful students, it is life. Brush is your mind. And the colors and shades, thoughts, emotions, feelings, attitude, behaviors, beliefs. अगर इन चीजों पर हमने थोड़ा सा अपना अटेंशन रखा, इन चीजों पर हमने थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखा, इन चीजों को थोड़ा सा हमने चैनलाइज किया फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, नेगेटिव एटीट्यूड to something which is very positive, believe me, my canvas of life is going to be with very bright, beautiful, encouraging colors and experiences. So what if I have to tell you something very interesting? Nothing, anything, everything you experience, you may experience, you can experience in life, no matter how terrible or good, will ever be anything more than a bunch of thoughts, feelings, emotion, plus a few physical sensations. This is me. So if I tell you who is Girish, it's nothing but the emotion, the thoughts that I create, the corresponding feeling that these thoughts generate, and the emotions, plus a few physical sensations. Based on it, I will take decisions. Based on it, I will do my action. Based on it, a personality is created. Based on it, my destiny is designed. लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा अपने ही मन के विचारों पर, फीलिंग्स, इमोशंस, बिलीव्स, एटीट्यूड, परसेप्शंस पर सही नियंत्रण नहीं है. So my first question, can you handle that? What? The thoughts, emotions, attitude, experiences, belief, and always, कभी कभी नहीं, सदा क्या मैं इन इमोशंस को हैंडल कर सकता हूँ? तो ये अगर आपने हैंडल कर लिया तो आपका परफॉर्मेंस 100% पीक पे जाएगा. उसके लिए मैं आपको 5 सॉल्यूशंस देता हूँ. नंबर 1, can you self hypnotize yourself? Why? I'll tell you later. Number 2,
Can we take advantage of this Pygmalion effect? It has everything to do with the thoughts, emotions, and feelings. And I have not created this. There are beautiful people out there. Psychologists have created this. Third, I don't know whether you've heard this new word. You've always heard about a word called as discipline. बट डिस को निकाल दीजिए, उसके अंदर ब्लिस को डाल दिया. ब्लिस माना आनंद. ये भी मैंने वर्ड कॉइन नहीं किया है, डॉक्टर बेकवर्थ करके हैं. आई शेयर इट इफ टाइम परमिट्स. द थर्ड इज डिसिप्लिन. हर चीज करते हुए आनंद की स्थिति. नंबर फोर्थ इज फ्रॉम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. इट इज कॉल्ड एज मेंटल इमेजरी. एंड द लास्ट वन इज द माइंड बॉडी कनेक्ट. और ये सब पांचों चीजों को अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कहूं, जो हमारा मेडिकल विंग प्रोपोगेट करता है, द ब्रह्मा कुमारी, उसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन. ये राजयोग मेडिटेशन में आपको पांचों चीजों का एलिमेंट और प्रेजेंस आपको मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. ठीक है. नंबर वन इज सेल्फ हिप्नोटाइज. सेल्फ हिप्नोटाइज योरसेल्फ टू क्राफ्ट new identities for yourself towards health, well-being, or experience life with ease. So now self-hypnotize or hypnosis becomes a tool. Why? This we have to understand. Because the universe acts as a mirror. It reflects to you of what you are. The universe will not give you what you want, but to reflect to you who you are. I'll give you a simple example. मैं चाहता हूं कि आने वाले एग्जाम में, जो भी आपके एग्जाम है, उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले. वो मैं चाहता हूं. अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो. लेकिन मैं जो हूं, अगर मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डाउट है, मुझे इनसिक्योरिटी है, मुझे एंजाइटी हो रही है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो जो मैं हूं वो डेफिनेटली होगा. सो एन एंशियस माइंड, doubtful mind, a fearful mind will not be able to touch peak performance, even though you do 24 hours of study, which I mean practically not possible, because the mind is tired, it's weak, it's vulnerable, it's susceptible. That's what you are. मैंने कहा आप क्या हो? Thoughts, feelings, emotions, and few physical sensations, and thereof your decisions, your actions, your words, and जो आप कर्म में करोगे. तो जो मैं हूं या मैं जो बनना चाहता हूं, आप सेल्फ हिप्नोटाइज कर लीजिए अपने आप को. I'll give you examples. What you believe to be true about yourself will be reflected to you by the universe. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, स्वयं का, स्वयं के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है. पता है हम लोग क्या करते हैं? मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को बहुत काम करना है, ये बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ. आपको टाइम ही नहीं मिलेगा. कैसे टाइम नहीं मिलेगा? से फॉर एग्जाम्पल, एक टास्क को करने के लिए टेक्स 5 मिनट, बट योर ब्रेन विल अंडरस्टैंड इट. बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ. वो 5 मिनट का काम आपका 15 मिनट में होगा, और वैसे ही टाइम नहीं है. बिकॉज द यूनिवर्स विल नॉट रीअरेंज फॉर व्हाट यू वांट. मैं तो 5 मिनट में करना चाहता हूँ, लेकिन कह क्या रहा हूँ? मैंने हिप्नोटाइज क्या किया? बिजी हूँ बिजी हूँ. आपको 15 मिनट लेगा वो. सो द यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट टू यू हु यू आर. एंड व्हाट एम आई सेइंग टू माई सेल्फ? आई एम वेरी बिजी. और अच्छे काम के लिए हमको टाइम नहीं मिलेगा, अपने को सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जीवन के सुख को, आनंद को अनुभव करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. Every human being is hypnotized to some extent, either by ideas he has uncritically accepted from others, or ideas he or she has repeated to himself and convinced himself to be true. My dear students, please, give a lot of attention to these statements. I have examples, but let me see if I get time, I'll share it with you. We are all hypnotized, but we don't know we are. And we call it as that's what my personality is. I mean, that's perfectly fine. But उसको revisit तो करो. और अगर वो ठीक नहीं है, जो आपको मदद नहीं कर रहा है पीक परफॉर्मेंस के लिए, उसको रीडिफाइन तो करो. वो एबिलिटी तो आपके पास है, उसको री इन्वेंट तो करो. हमको पता ही नहीं है वो. और हम, ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है.
In America, I'll give you a scientific evidence. In America, there was a time when small babies, अर्थात crawling babies, उनका death were reported very high. And what was the cause? So the crawling babies, parents would not pay attention onto the little kids. The crawling baby would crawl out of the house, will crawl and fall into the swimming pool, drown and die. And there was a very high number of cases reported in America. So the American parents came up with a brilliant idea, unlike the Indian minds. You know what they did? Can anyone guess? मृत्यु दर बच्चों का एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग ना हो, इसके लिए अमेरिकन पेरेंट्स ने क्या किया होगा? कैन एनीवन टाइप ऑन द चैट बॉक्स, और मे बी इफ यू कैन रेज योर हैंड, आई विल बी वेरी हैप्पी. क्या किया होगा अमेरिकन पेरेंट्स ने ताकि इनकी मृत्यु कम हो, एक्सीडेंटल डेथ? ओके, लेट मी शेयर. पता है अमेरिकन पेरेंट्स ने क्या किया? दे टॉट दीज लिटिल क्रॉलिंग बेबीज स्विमिंग. या डॉक्टर लेखी मैम, थैंक यू. उन्होंने इन बच्चों को स्विमिंग करना सिखा दिया. अब जब मैंने पहली बार ये सुना और पढ़ा, मेरे तो होश उड़ गए. क्यों? क्योंकि गिरीश एट द एज ऑफ 50 इयर्स आज भी हम पानी गड़क गड़क करके पीते हैं स्विमिंग सीखने के लिए. और आप ये 1 year old, लेस 1 year old बेबीज को आप स्विमिंग कैसे सिखा सकते हो? द रिस्क फैक्टर इज वेरी हाई. So the parents took the baby into the swimming pool, mom, dad, and the trainer standing next to the baby, and they left the baby into the swimming pool. So the baby sank into the water. And you know what they observed? Two beautiful phenomena that the baby was able to exhibit naturally. It was not an acquired phenomena. It came to the baby on the जिसको हम कहेंगे by birth. You know what they saw? They saw that the baby, number one phenomena, the baby was able to hold the breath through the nose and through the mouth. Girish अगर गलती से पानी में गिर जाए, not knowing swimming, I'll start gulping water under shock within no time, and I will suffocate to death. But the baby was able to hold the breath. Number two, the baby was able to keep the eyes open in the swimming pool. क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने पता लगाया, क्योंकि बेबी माँ के गर्भ में वो amniotic fluid से सराउंडेड रहता है. It feels that the baby feels like I'm swimming. You know, गर्भ के अंदर आंखें खोल के रख पाता है. So the baby felt as if it's in the mother's womb for to some time. The baby was able to hold the breath. इसका फायदा माता पिता ने उठा लिया. अर्थात बेबी जब गिरता है अंडर शॉक विल नॉट स्टार्ट गल्पिंग वाटर. उसको टर्न होना सिखाया ऑन द बैक एंड हाथ पैर से पैडल करना सिखाया. Maybe students, you might have seen a lot of videos in the YouTube. Baby starts, swimming. ठीक है. अब कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ. And you know what medical science and pediatricians say? You can take a baby. 4 महीने तक बच्चे को स्विमिंग पूल में नहीं लेके जाइए. 5th month onwards, you can take the baby to swimming. So the fact of the matter is, a 5-month-old baby can be taught swimming. और इस phenomena को, if I'm not wrong, pediatrician call it as bradycardic response of an infant. It comes to the baby naturally. अब इसका मैं आपको इंडियन एक्सपीरियंस सुनाता हूँ. अब इंडियन एक्सपीरियंस इज इंटरेस्टिंग. भारत में आइए, थैंक्स टू मदर्स डे, मम्मी पापा, छोटू बेबी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, द होल फैमिली गोज फॉर अ वीकेंड आउटिंग. और वीकेंड पिकनिक या आउटिंग में जहां वो स्थान चुना, वहां एक वाटर बॉडी है, वहां नदी है, झरना है, समुद्र है, स्विमिंग पूल है, एनी वाटर बॉडी. एंड अ टिपिकल इंडियन मदर विल होल्ड द बेबीज हैंड सो टाइट, जो इंडियन पुलिस अपना कैदी का हाथ नहीं पकड़ता है. एंड एक ही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बोलती है, नजदीक नहीं जाना, तुम डूब जाएगा. 15 साल तक डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा. माय डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज हिप्नोसिस. मम्मी को बच्चे का होने का डर है, but then she says, I love my child. But what she is not able to understand is, what the society doesn't understand is, in the drivenness for protection or compassion and care, what we are doing, unfortunately, is creating a wrong belief system in the minds of the child. अब ये बच्चा, 15 साल का बच्चा, पानी में उसको उतरने को बोलो, स्विमिंग में, वो बोलेगा मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी लग रहा है, मुझे फ्यूचर का इनसिक्योरिटी लग रहा है. और आप क्या हो? मैंने आपको पहला स्लाइड में बताया, कैन यू ऑलवेज हैंडल दैट? थॉट,
फीलिंग लग रहा है, फीलिंग ही तो है, और ये गलत लग रहा है बच्चों, ये गलत इमोशन है, और इसका करस्पॉन्डिंग एक्शन, इसका करस्पॉन्डिंग decision is all going to not help you to touch the peak performance. We are all hypnotized, but we don't know we are hypnotized. So the fact of the matter is, a 5-month-old baby can be taught swimming. Here, a 15-year-old boy. Ab, I have a question for you. Suppose you are that mind, which is a medical mind, and you have a lot of aspirations, goals, and dreams to achieve. But then this mind for the last 15 years has been programmed thanks to mom, dad, society, media, religion, books, peers, anybody and everybody. They all kept on, feeding me. कि डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे. And this is where the whole problem lies. So when I'm speaking about mental prescription, we have to change, convert with self-hypnosis. Meditation will help you with that. So if I need to give you a proof, you should read a book. It's called as Psycho-Cybernetics. It is written by a plastic surgeon. And plastic surgeon कहता है, मैंने व्यक्ति का प्लास्टिक नोज का थोड़ा सा जॉब ठीक किया, बहुत आइडेंटिफाइबल भी नहीं था, और वो पेशेंट मेरे पास आया और कहा, सर मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा सेल्स अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि मेरा नाक टेढ़ा है, लोग मुझे पसंद नहीं करते. डॉक्टर ने कहा ठीक है, बोल रहा है, डॉक्टर ने कहा कुछ भी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग ऑपरेटेड. सो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया. एंड द डॉक्टर हिमसेल्फ सेज, डॉक्टर मैक्सवेल हिमसेल्फ सेज, पोस्ट ऑपरेशन ऑल्सो आई कुडंट सी द डिफरेंस कि प्री ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेशन क्या था, लेकिन पेशेंट चाहता था. मैं उसने कहा बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन उसका सेल्फ इमेज ये था, अब मैं अच्छा दिख रहा हूं, पहले मैं अच्छा नहीं दिखता था, अब मैं अच्छा हूं, अब लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे जॉब मिल जाएगा, क्योंकि नाक वाज अ प्रॉब्लम. एंड ही गॉट अ जॉब, सेल्स इंप्रूव्ड. एंड डॉक्टर मैक्सवेल सेज, ओ गॉड, आई एम वर्किंग ऑन द रॉन्ग प्लास्टिक सर्जरी. मैं कहां पर ब्यूटी कर रहा हूं, मैं शरीर को कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम शरीर का नहीं है, प्रॉब्लम मन का है. सेल्फ इमेज का ब्यूटी, सेल्फ इमेज का प्लास्टिक सर्जरी कर लो. And this is the example he mentions in his book. In a study testing whether relationship between exercise and health is moderated by one's mindset, 84 female room attendants working in 7 different hotels were measured on physiological health variables affected by exercise. तो दो ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में 84 महिलाओं को रखा. They were hotel maids. Those in the informed group, conditions were told that the work they do, cleaning hotel rooms, is a good exercise and satisfies the general surgeon's recommendation for an active lifestyle. इन 84 महिलाओं को कहा, demonstrate करके दिखाया examples, कि आप mopping कर रहे हो, that's an exercise. You're taking the stairs, you're dusting it, it's an exercise. Everything that they were doing, they were demonstrated, it's an exercise, it's an exercise. And it matches the surgeon's general recommendation for an active. Say, for example, they were walking 10,000 steps. 10,000 steps is healthy lifestyle. Subjects in the control group were not given this information. Although actual behavior did not change, they did not change their diet, they did not go and hit the gym. उन्होंने कुछ ठीक अलग सा नहीं किया, उन्होंने वही एक्सरसाइज, मतलब वही रूम का क्लीनिंग वीनिंग अपना जॉब किया. 4 weeks after the intervention, the informed group perceived themselves, look at the self-image, look at the self-hypnosis, themselves to be getting significantly more exercise than before. उनको लग रहा है, डूबने का डर लग रहा है, सारा खेल ही लगने का है बच्चों. अब मुझे लग रहा है कि मैं ये जो कर रही हूँ ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है. As a result, compared with the control group, they showed a decrease in weight, blood pressure improved, body fat became normal, waist to hip ratio जो भी desired था, they were able to achieve that, and body mass index जो भी एक healthy body का होता है. These results supports the hypothesis that exercise affects health in part or in whole via placebo effect. आपको सोचना है और करना भी है, और अगर किसी कारण नहीं भी कर पा रहे for some reason, can you आप अपने आप को hypnotize कर सकते हो क्या? Number 2 tool. So I have a humble request, my dear students.
Can you self-hypnotize and give and suggest yourself very wonderful commandments to yourself and create a wonderful mental model? Being a resident doctor is the most satisfying work. रेसिडेंट डॉक्टर्स थोड़ा मुस्कुराइए. कुछ रेसिडेंट डॉक्टर सोच रहे होंगे टकलू तू आके काम कर 24 घंटा तो पता चलेगा कौन सा मजे वाला काम. भाषण करना बहुत आसान है. योर चॉइस माय डियर स्टूडेंट. द सेकंड वन, पिग्मिलियन इफेक्ट. You can do it for yourself, you can do it for your team, you can do it for your children, you can do it for anybody and everybody. You can do better when other people believe you would. तुम नहीं कर सकते हो, गए काम से. आप अपने जूनियर्स को, आप अपने पेशेंट्स को बोलो, ओ आप ठीक हो. So there are two things. One is healing, the other is treating. Treatment से कोई ठीक हो जाए, thank you. But अगर उसमें the element of healing, the element of emotions and positivity. This is because of the Pygmalion effect. High expectation. What is it? In 1968, a Harvard psychologist named Robert Rosenthal and a school principal, Jacobson, founded the Pygmalion effect theory in education. And I still use it, friends. It has given me beautiful result. I was a teacher in Mumbai for almost 10 years. It worked brilliant. I had no clue that I'm using Pygmalion effect. I was into Brahma Kumari since 1997. I used it. I had no idea that this is what God is trying to, achieve through me. How it happens? There are 4 pillars to it. आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. I mean, I'll give you what they did actually with that school. छोटे बच्चों के क्लास में जाकर उन्होंने एक IQ टेस्ट लिया. सिंपल नॉर्मल टेस्ट लिया. उसका रिजल्ट ये रोशनथाल और स्कूल प्रिंसिपल ने अपने पास रख लिया. क्लास टीचर को बुलाया, दिखाया नहीं रिजल्ट. क्लास टीचर को कहा इसमें से रैंडमली दे पिक 10 स्टूडेंट्स और कहा ये 10 बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है. इट वाज ओनली टोल्ड टू द टीचर, द प्रूफ वाज नॉट गिवन. एंड व्हाट वुड द टीचर डू? द टीचर विल बिलीव. आपको कोई बोलेंगे ये बच्चे अच्छे हैं तो मैं तो उसी माइंडसेट से जाऊंगा ना कि अच्छे बच्चे हैं. ठीक है. फर्स्ट पिलर, आवर बिलीफ अबाउट अदर्स. टीचर का बिलीफ अबाउट द स्टूडेंट कि ये अच्छे हैं, दैट विल इन्फ्लुएंस आवर एक्शन टुवर्ड्स देम. क्लास में टीचर ने ऐसे ही सवाल पूछा और या फिर बच्चे मस्ती कर रहे थे. ये 10 बच्चों में एक बच्चा मस्ती कर रहे थे. पता टीचर ने कहा बेटा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो. प्रिंसिपल सर ने कहा ऐसा मस्ती नहीं करते. ओ लुक एट द रिस्पॉन्स, लुक एट माई एक्शन. और कम पढ़ने वाला होगा, थोड़ा मस्ती करने वाला, उसको मैं डांट दूंगा, नालायक बाहर निकल. समझता क्या तू अपने आप को? लुक एट माई एक्शन. टीचर ने एक दिन प्रश्न पूछा, नॉट अ रॉकेट साइंस, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा. ये 10 में से एक को पूछा, उसने जवाब दे दिया. पता टीचर ने कहा देखा मैं जानती हूँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे सब पता है. ओ माय गॉड, लुक एट द बिहेवियर, लुक एट माय एक्शंस. दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज माय एक्शन टुवर्ड्स द अदर पर्सन. थर्ड पिलर, इट इम्पैक्ट्स द अदर्स बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स. जब टीचर ने कहा मैं जानती हूँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है. बच्चे ने पता टीचर को कैसे देखा? अरे भैया मुझे ही नहीं पता, मैं अच्छा हूं, तुमको पता चल गया. This is bringing out the inner, the beauty. We are all so beautiful, but the tragedy is we are convinced we are not. Look at the teacher playing the role, not knowing that the student is not good. His scores are not good. पता ही नहीं है, लेकिन belief, actions and गिरिश student का belief. अच्छा मैं अच्छा हूँ, टीचर कहती है मैं इंटेलिजेंट हूँ. Others belief about themselves, it will cause the others action towards. अब मुझे टीचर अच्छी लगने लगी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा, मेरे को उनका अप्रिसिएशन अच्छा लगने लगा, उनके गुड वर्ड्स अच्छे लगने लगे. उसको और प्राप्त करने के लिए मैं और मेहनत करने लगा. एंड पता है इसका रिजल्ट? आफ्टर 1 ईयर रोशनथाल ने आकर वही बच्चों का वापस एग्जाम लिया. एंड यू नो व्हाट दे फाउंड? ये 10 रैंडमली पिक स्टूडेंट्स का स्कोर वर रियली गुड. But initially 1 year back, it was not good. First, the expectation is for, can you do Pygmalion effect for yourself? Can you do it for your parents? Can you do it for your siblings? Can you do it for your junior resident doctors? Oh my God. You can do it for anybody and everybody. Tax free. You don't have to do anything. Just think. Mother's Day में कहना चाहता हूँ, मम्मी पता है बच्चे मेरे पास लाकर क्या कहती है? सर ये बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ता नहीं है. अरे मत बोलो पढ़ता नहीं है.
क्या बिलीफ है आपका उस बच्चे के साथ? और पता है बच्चा क्या बोलेगा? कितना पढ़ूं? आप अरे 1 घंटे में पढ़ के अगर 99 मिल रहे हैं तो काय को पढ़ूं? अब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और मम्मी और बच्चे का जम नहीं रहा है। Then the expectation is communicated. Then the behavior is adapted to meet the expectation. The child will start studying because he started loving the teacher, liking the teacher, and finally the expectations becomes true. टीचर ने 1 साल पहले कहा था मैं जानती हूँ तुम इंटेलिजेंट हो, वो हो गया with this positive note. So second is Pygmalion effect. Third tool, what I call it as blisscipline. Blisscipline, मैंने नहीं क्रिएट किया, माइकल बेकविथ coined this term as blisscipline. So it is bliss plus discipline. आज लोग डिसिप्लिन वर्क हार्ड को लेकर उनका स्ट्रेस हो रहा है। सचिन रमेश तेंदुलकर को पूछो 24 साल, लता मंगेशकर को पूछो, यू आर अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यू आर द बेस्ट सिंगर आउट हियर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मेहनत किया, हार्ड वर्क, नो। पता है लता मंगेशकर क्या कहती थी? जीती हूं जब गाती हूं, हम और आप मरते हैं जब काम कर रहे हैं। ये जो मरना है ना, दैट्स अ इमोशन, गए काम से तो पूरा आफ्टर इफेक्ट होगा। Discipline. Discipline happens when you dedicate yourself to achieving a goal, but you enjoy the whole process. And I like Brahma Kumaris for it, friends. I have been with them for the last almost 28 years. I've seen the sisters. Brahma Kumaris doesn't pay them 1 single rupee. But the amount of dedication that I've seen, the amount of love they have for service. और मैं पूछता था उनको, आपका क्या मोटिवेशन है, आपको क्या एक्सटर्नल बेनिफिट्स है, क्या परक्विजिट्स है, क्या बोनसेस है, क्या आपको मिल रहा है? This is what something very beautiful. Discipline does not focus on the final step to reaching your dreams, but it focuses on the entire path itself. I want you to guess. Without at least 2 responses, I'll not go forward. ठीक है ना? Whether it is 10 o'clock or 10:30, we can wind it up. But I want 2 responses. ठीक है? Who wrote this? And I want you to read it loudly wherever you're sitting. I was early taught to work as well as play. My life has been one long, happy holiday, full of work and full of play. And I dropped the worry on the way, and God was good to me every day. I have a request. Please write it in the chat box. I mean, internet search नहीं करना बच्चे. I know you're too smart. हे भगवान, ठीक है? हाँ बताइए, ये व्यक्ति कौन हो सकता है? डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, स्पिरिचुअलिस्ट होगा, सन्यासी होगा, पॉलिटिशियन होगा, बिजनेसमैन होगा? क्या लगता है ये जो लिख रहा है, ये कौन हो सकता है बच्चों? ओ सॉरी, आई होप यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू रीड एवरीथिंग इन अ blink of a second. मेरे को ना चैट, हाँ हाँ हाँ, चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, somebody has written something. एपीजे अब्दुल कलाम, वनीता जी, oh my god, too good. I was a big fan. I'm still a big fan of Dr. Kalam. Good. I really are. I mean, you are able to understand the message. Too good. Vanita, by chance, you are a resident doctor? Yes or no? कितना टाइम हमारा चला जाता है. Oh, you are a consultant. That is why you could write it. Anyway, okay. Too good, man. Thank you so much. Any student? थोड़ा दिमाग, अरे कुछ भी लिख दो भाई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो बाकी सब दुखी हो जाएंगे. स्पोर्ट्स पर्सन है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, साइंटिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, क्या कहूँ, टेक्नोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, गिरीश भाई जैसे कोई सन्यासी है बेचारा, वाइट वाइट पहन के हमको सुना रहा है ज्ञान. चलो लास्ट वन मोर, वॉल्ट डिज्नी. टू गुड, चलो ठीक है, वंडरफुल. बट आई एम सो हैप्पी दैट यू आर एबल टू राइट that somebody who's very, very successful. Let me tell you, I was also very surprised. It's Mr. Rockefeller Sr., who was an American businessman and a philanthropist. Please, you can check the internet. He was considered to be at one point of time the wealthiest American of all time and the richest person in modern history. And you know what he says, my dear students? Work and play, look at the balance. And life is a long, happy day. Look at their stress-free life.
full of work and full of play, and in the work, and I dropped the worry on the way, and God was good to me every day. अरे I find that this is a little boy, एक छोटा बच्चे ने लिखा होगा, जिसको पढ़ाई में भी टेंशन नहीं है, वो होमवर्क भी मजे से कर रहा है, टीचर की डांट भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है डांट बुरा है, होमवर्क नहीं करूंगा पनिशमेंट हो जाएगा, सबके सामने मुझे मुर्गा बना देगा, दैट्स एन इंसल्ट, वो सब कुछ कर ही नहीं रहा है। एंड आई ड्रॉप द वरी, होमवर्क पापा देखेंगे जी, मम्मी देखेंगी, मेरे को क्या करना है। ओ लुक एट, आई मीन आई, when this I was, reading this, I said, a small child, can I be that small child, very natural, a 5-month-old baby who knows how to swim. Third, sorry, and the fourth, the science of mental imagery. I mean, you're doctors, you would know it better, don't take it as an information, but I'm passing it on an information. The central nervous system, that is the brain, and the entire central nervous system cannot distinguish between actual physical movement, and then that one is clearly imagined. Can I use the power of imagination? Raj Yoga meditation takes the help of this imagination, which makes it possible for me to achieve it. The brain has similar neural activity when you imagine performing a skill as when you actually physically perform it. The brain can get practice without having to do anything more than imagining you are performing. Chalo, let me give you an example. बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। कल रात को, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, आप जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? Whom do I talk to maximum? हेलो, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? ओ एक मिनट, 7 से, ओ अपने आप से, वंडरफुल, 1 सेल्फ, ठीक है, गुड। अच्छा, अपने आप से जो बातें करता है उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है या रियलिटी ज्यादा होता है? बताइए बताइए। हाँ, फिक्शन, वेरी करेक्ट। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, वेरी गुड। अच्छा, इमेजिनरी सेल्फ टॉक में नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है कि पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है? क्या बात है शरद, मतलब पूछा नहीं, आपके पेट से जवाब आया, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, गुड। और कुछ लोग पॉजिटिव भी लिख रहे हैं, वंडरफुल, गुड। बाय एंड लार्ज इट इज नेगेटिव, ठीक है। सो आई टॉक टू माई सेल्फ imaginary, and that too negative imagination. So I'll give you an example, which I shouldn't, but just for information. So yesterday night in my dream, I had a bad, in my sleep, I had a bad dream, a negative dream. My dear friends, dream is imagination or reality? By and large, imagination. And I saw a negative dream, ठीक है। और मैंने देखा एक डॉग मुझे, the dog is chasing me to bite me. So what will Girish do? I'll run for my life. The maximum I can outrun a doggy could be few seconds. And by the time the dog catches hold of my legs and bites me, मुझे बहुत डर लगा, मुझे बहुत घबराहट हुई, मुझे बहुत दर्द लगा, and I screamed at the top of my voice, only to break out of my dream slash my sleep, and only to open my eyes and see the fan rumbling. मैंने कहा ये पंखा कहाँ से आ गया? Because I was running for my life. I thanked the Almighty, बच गए, ये सपना देख रहा था, ये रियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, उस वक्त आप ऑल रेसिडेंट डॉक्टर्स जो भी यहाँ पर हैं, अदरवाइज ऑल्सो, आप गिरीश का उस वक्त वाइटल साइंस चेक करें, मेरा बीपी, मेरा पल्स रेट, मेरा हार्ट बीट। आई हैव अ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, हाई होगा या नॉर्मल होगा? रेज्ड, वंडरफुल। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? हम तो चारों खाने चित्त सो रहे थे, बीपी किसने बढ़ा दिया? I was actually not running. There was no real threat. There was no real dog. There was no real Girish running for his life. Just by imagining, I can experience fear. I can experience pain. And the physiological response, my BP, अब जो रियल में मैं अगर भागूंगा, जो जो मेरा बॉडी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा वो वहां पे भी हुआ, बेड में लेटे लेटे। So now I have a question. हमारा ब्रेन इज अ वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन, उसको नहीं पता चलता आप इमेजिन कर रहे हो या रियल है। तो दोस्तों, आई हैव अ क्वेश्चन, क्या ऐसे ही राइट नाउ बैठ करके मेडिटेशन में पॉजिटिव इमेजिन करके मेरा कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा,
सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरा कल का लाइफ स्ट्रेस फ्री है, and I love doing what I'm doing. Can't I experience love from my profession, love from my colleagues, love from my loved ones? अगर fear का अनुभव हो सकता है without there being a dog, and I let us assume nobody loves me. Let us assume I have a very terrible life. Let us assume I have a lot of interpersonal issues back in my hospital where I'm a resident doctor. What is it that what you want to experience? And what you want to experience, mental imagery will help you. Just think, just imagine and feel it, and it will happen. I'll give you one example. 2008, Michael Phelps, only Olympian, only man in the history of the game, human being in the history of the game of Olympics, 8 gold medal, and that too 2008 Beijing Olympics. Till that time, 7 gold medals. 200-meter butterfly. When he jumped into the swimming pool, his goggles leaked and both the eyes were filled with water. So he relied on the feel of his imagery to know where he was and when and how to stretch for the finish. He finished strong and won another gold medal, setting world record. 200 मीटर आपकी आंखों में पानी, आपको कुछ नहीं दिख रहा है और आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हो जी, ऐसे कैसे कर लिया? पता है, इसको पूछा गया है इंटरव्यू में, प्रेस में, आप हाउ कैन यू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हेन योर आईज आर टर्न ब्लाइंड? यू नो व्हाट ही सेड? इस घटना को, इस अप्रिय इवेंचुअलिटी को, द वर्स्ट दैट कैन हैपन इन माय लाइफ, आई थॉट and I imagined it 10,000 times that I jumped into the swimming pool, the worst scenario, my goggles will leak, and I relied on the feel of itne stroke mein main 50 meter, 100, 150, 200, and I'm setting the world record. बच्चों जैसा सोचेंगे, अच्छा या बुरा, आपका ब्रेन को नहीं समझ में आता, आप इमेजिन कर रहे हो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा. And that's the beauty, but you have to feel it, you have to believe in it. I will not take much time. You know, he was an Olympic gold medal, Lanny Basham, 2 to 4 hours. For some reason, he couldn't go to the shooting range. They are all very, I mean, authenticated data that I'm presenting it to you. He did not go to the shooting range, but he did it call as a dry firing. 2 to 4 hours, he would, you know, bedroom में पूरा ड्रेस वे सब पहनेगा, ऐसे फील करेगा जैसे मैं शूटिंग रेंज में हूँ, लोग बैठे हुए हैं, दिस इज द फाइनल, फील करना है, वो इमोट करना है. And he won the world championship that year in Seoul. The last one, the mind-body connection, friends. आप जानते भी होंगे, I'm not aware of it. The Brahma Kumaris, the medical wing, हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता, we did 8-year study on, you know, with Dr. APJ Abdul Kalam on regressing coronary artery disease. So I have a request: build 3 factories in your life, and the 4th one you will get automatically. रेसिडेंट डॉक्टर, कुछ लोग बोलेंगे टकलू, एक तो रेसिडेंट डॉक्टर का काम करो, ऊपर से 3-3 फैक्ट्री बनाओ, बिजनेस करो, क्या चल रहा है यहाँ पे? चलिए, पहला, प्लीज क्रिएट एन आइस फैक्ट्री इन योर ब्रेन, बी कूल, गड़बड़ नहीं करिए यहाँ पे, चिंता नहीं करिए, परेशान नहीं होइए. नंबर 2, हैव अ शुगर फैक्ट्री इन योर टंग. आप लोग महाराष्ट्र में हैं, नागपुर, ओ हो, खूब सारा गन्ना उगता है जी, वहां मत उगाइए, यहाँ पर एक फैक्ट्री सेट कर लीजिए, विच आई कॉल इट एज अ शुगर फैक्ट्री इन योर टंग, बी स्वीट. नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारे कुछ रेसिडेंट डॉक्टर हैं, बोलेंगे सर दुखी हो गए प्यार में, धोखा खाए हैं भर भर के, अभी नहीं, एमबीबीएस में ही धोखा खा लिए थे, कोई सॉरी, हाँ प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो दूसरे बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है. लव फैक्ट्री इन योर हार्ट, बी काम. सचिन तेंदुलकर को मैंने पूछा आप इतने सफल बल्लेबाज क्यों हैं, लॉन्ग बैक हिस्ट्री, यू नो व्हाट ही सेड, आई लव क्रिकेट. दोस्तों, जिस चीज से प्यार होता है ना, उससे कभी आप इरिटेटेड नहीं हो सकते हो, और अगर इरिटेट हो रहे हो तो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, बहुत कुछ चीजें. अकॉर्डिंग टू मी, लव इज लाइक अ गुलाब जामुन, खाओगे तो मीठा ही लगेगा. क्यों? इनेट इंग्रेडिएंट शक्कर है, शक्कर शुगर केन का बना है, शुगर केन बाय डिफॉल्ट मीठा होता है, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो ऐसा ही है. तो शुगर गुलाब जामुन नेचुरली मीठा होगा.
अब प्रॉब्लम पता है लव के साथ क्या है? खा रहा हूँ गुलाब जामुन, लग रहा है तीखा, लग रहा है कड़वा। अरे भैया, तुम खा रहे हो समोसा और कह रहे हो गुलाब जामुन। दैट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है, अगर ऐसा होगा, ये तीनों फैक्ट्री आप एस्टैब्लिश करोगे, फोर्थ फैक्ट्री फ्री गिफ्ट में आपको मिलेगा, देन लाइफ विल बी सेटिस्फैक्ट्री। आहा, संतुष्ट, इजी, मजेदार, you will start enjoying life. World Congress on Clinical and Preventive Cardiology, three-dimensional healthcare program for healthy mind, heart, and body. You can see WCCPC 2006. Dr. Kalam went on to become the president of the country, but when he initiated this project, he was a chief of DRDO. And 8 years of study, mind-body synergy study, Defense Institute of Physiology and Allied Sciences, New Delhi, Global Hospital and Research Center, Mount Abu, Morarji Desai Institute, UN Mehta, GB Pant, the Grant Medical College, sponsored by so-and-so. 8 years of study. And you can find this information, presidentofindia.nic.in. I mean, you can go back. I want to just highlight a few things. I want you to read the second bullet point. All our healthcare system have focused attention on physical disease and physical body. This is not me, huh? This is Dr. Kalam. Third point, mind, the controller and generator of physical health. Mind, the controller and generator of disease, remains untamed. आप या तो कुत्ते को देख लो या प्यार को देख लो। क्या बैठ के मैं ये नहीं सोच सकता हूँ, डॉग को उल्टा करिए, डीओजी को उल्टा करिए, जीओडी गॉड। इमेजिन कर लीजिए, मेरे लिए तो भगवान सत्य है। मैं इमेजिन करता हूँ अगले 2 मिनट के लिए भगवान मेरे बाजू में बैठा है, मुझे गले लगा के कह रहा, बच्चे चिंता नहीं करो, मैं हूं। वो आपको कितना एनर्जी फील होगा। डॉग था नहीं, फिर भी मेरा बीपी चढ़ गया, तो क्या भगवान को फील करके मैं सुख को, शांति को, भरपूरता को, फुलफिलमेंट को, सेटिस्फैक्शन को नहीं अनुभव कर सकता हूँ? 200% कर सकता हूँ फिर। And this mind remains untamed. You should read this book, friends. 2 books I've suggested. One is Psycho-Cybernetics, Dr. Maxwell. Number 2, Man the Unknown, written by a Nobel laureate, Dr. Alexis Carrel. You know what he brought out in that book? How in US medical schools, treatment deals mostly converting pathology to physiology. Everything is report, report, report. Whereas the cause of pain and disease arises out of a lack of integrating mechanism of mind and body. हम माइंड को तो ले ही रहे हैं, बेचारा पेशेंट कितना दुखी है, मेरे मन को भी मैं नहीं देख रहा हूँ, दुखी है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, इनसिक्योर है, डरा हुआ है, और इसको लेकर के हम अच्छा करना चाहते हैं जीवन को. So the fourth dimension of spiritual well-being should be added, and that's why he got in touch with the Brahma Kumaris. And because the fourth dimension of spiritual health care to take care of total heart health, global hospital and research center, an institution of the Brahma Kumaris. More than 9 years, 8 to 9 years, they worked on it. And you know what was the basis, hypothesis? बहुत ध्यान से सुनना please. Our thoughts, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, thoughts, feelings, emotion, वही चीज है scientifically है. Our thoughts are just not mere vibrations in the air. They are definite electrochemical processes taking place in the hypothalamus with physiological consequences. So thoughts get converted into matter through neuropeptides, and it speaks to 50 to 60 trillion cells. You see the round circle? If my thoughts are full of distress, worry, anger, fear, ego, anxiety, hopelessness, the brain starts pouring stress hormone, sympathetic dominance, and it will set in syndrome X, onset of coronary artery disease. If I can reverse this thought process to the green box, positive thoughts, peace, bliss, happiness, parasympathetic sympathetic dominance, and regression of coronary artery. हमारा आज ये प्रोजेक्ट 10,000 लोगों का हमको एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन. इनिशियली वी did it with 518 CAT patients. Today we have 10,000 angiographic evaluation. 7 days ये हार्ट पेशेंट्स हमारे पास माउंट आबू में आते थे. आबू ट्रायल, within 7 days, marked reduction in the drug score, symptom score, improvement in exercise tolerance, stress hormone profile, lipid profile, and psychological profile. I'll show you 2 evidences. This is 4th August 2001, 56-year-old Mr. Chotelal, 78.85% blockages. Within a year's time, 47.
The next one is very, very interesting. 90% block in almost 2 years time. इस पेशेंट को जो ना 89-90% वाले को आप सीधे बोलोगे एडमिट हो जाओ, बाईपास करा लो, स्टेंट डालो, ओपन हार्ट सर्जरी करा लो. इस पेशेंट को हमने टच नहीं किया. 0 रुपीज एंड 2000 ऐसे 10,000 एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन है, ऑलमोस्ट अराउंड 40%. So this proves enough of evidence, my dear wonderful students, for peak performance. One can I train my mind? I am not the mind. मैं मन नहीं हूं. पता हूं मैं कौन हूं. मैं एक एनर्जी हूं. जब ये एनर्जी सोचता है उसको हम मन कहते हैं. जब ये एनर्जी डिसाइड करता है तो उसको हम बुद्धि कहते हैं. जब ये एनर्जी उस चीज को हैबिट बना लेता है उसको मैं पर्सनालिटी या संस्कार कहता हूँ. और इस एनर्जी को मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा, लाइफ फोर्स, पावर, एनर्जी, रूह, सोल, जो कहना कह लो. तो आपका हाथ को आप डिसाइड करोगे प्यास लग रही है तो पानी का बॉटल उठा करके आई विल ड्रिंक. ऐसे ही मन रूपी हाथ को बोलो, हे मन, the next 2 minutes be with me, don't go into the past, neither the future, no negative, think positive, imagine, mental imagery, mind body connect, Pygmalion effect, mental imagery, and self hypnosis all put together. Can I be pleasant to myself? Can I have self caring, self compassion, self empowered thoughts, feelings, and emotions for myself? Okay. Before we do 2 minutes of meditation, I would like, if you have any questions, I would be very happy to respond. Any questions you have? I understand it's a fag end of the day, 10:10. Most of you are still in the hospital, handling your patients, taking care of them. On top of it, you expect me to ask questions. I do understand your challenge, friends, but still. Okay. So in case you don't have any questions, at least tell me whether this was meaningful, whether this was helpful, whether this will add value to you in your professional career, in your personal life, in your ability to handle, the challenges that life throws to you, the kind of challenges you have in your hospital with your colleagues, your interpersonal relationship, your mental health. Yeah, wonderful. So the program organizer is writing, definitely, I want it. 4 factories. डॉक्टर लेखी, थैंक यू सो मच. 4 फैक्ट्री के तो मालिक बन जाओ जी बैठे बैठे बिना चिंता किए. वाओ, विक्रम सर से इज वेरी हेल्पफुल. गुड. चलो. So we will not take much time. It is already 10:05, 10:06. We will just do 2 minutes of meditation. क्या करना है बच्चों? Girish bhai, just 1 minute. Dr. हाँ, Aarti has some emergency to attend. So Please. can she just give her remarks for 2 minutes and then Please, we do please, the please. Oh, yeah. sorry. Dr. I missed that. Please. Dr. Sorry. Aarti, Yeah. हाँ, are you there? chairperson है ना? Yeah. She is the convener of the Please, series. please. Yeah. Dr. Aarti, are you there? Okay, then we go ahead with the meditation. Yeah. उनके उनके बिहाफ में कोई और भी कर सकते हैं? No, Chalo, chair. we'll do Shubhada, that Anuja afterwards. madam. Let him do the meditation first, and then Anuja we madam. take the. We do the meditation first, and then we take the remarks. चलिए. Yeah. So the way we had that, bad dream, similarly, just dream. लेकिन ड्रीम में एक चैलेंज है फ्रेंड्स. ड्रीम में आपको पता नहीं चलता है मैं गिरीश हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अभी ग्वालियर में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं हॉस्पिटल के बेड में हूँ या अपने घर में हूँ या राजधानी के बर्थ नंबर 3 में हूँ. अरे डेड. यू आर फ्री फ्रॉम द बॉडी, free from the relationships of the body, free from all the worldly thoughts. This is a challenge.
जिसने इन तीनों से डिटैच कर लिया अभी जागृत अवस्था में आंखें खोल करके, एंड देन ड्रीम लाइक द डॉग चेजिंग यू समथिंग पॉजिटिव, it will work. Don't get distracted. I mean, sometime later we'll speak about distraction and concentration, how to practice it. But that's a different chapter altogether. But I want you to little concentrate. अगर मन इधर उधर जाता भी है स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा कॉन्शियसली प्यार से सेट करें. जाता है तो जाने दीजिए, बट ब्रिंग इट बैक. ट्राई योर बेस्ट टू ब्रिंग इट बैक, टू पे अटेंशन. ठीक है, चलिए. इफ यू हैव पीपल अराउंड यू, just try to detach yourself from that. If you can come to a place wherein there is no distraction, uh, that will help you to, experience more. You can close your eyes and feel the external environment. Listen to the sounds around you, the temperature, the environment, the seat on which you're sitting. बाहर के जगत के संवेदनाओं को फील करें, सुने, महसूस करें. टेक वन स्टेप इनसाइड, भीतर की ओर जाएं. शरीर में होने वाले संवेदनाओं को फील करें. एक्सपीरियंस द सेंसेशंस हैपनिंग इन द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड टू द फिजिकल. योर हार्ट बीट, your breathe in and breathe out, any other bodily sensation in the body. Withdraw yourself from the sensation of the physical body and get into a sleep mode, completely detached from the body, from the relationship and the outside world. And imagine in the center of the forehead, जहाँ women, बहनें बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं. Imagine करिए, this is a sacred space. The body is a temple, and this is the space where the ideal मूर्ति, और वो मूर्ति एक चमकता हुआ सितारा है, a sparkling star, bright star. आसमान में जैसे सितारे दिखते हैं वैसे ही एक point of light, very bright, very luminous. Imagine this is the self. ये वो आत्मा है जो बहुत प्रकाशित है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शांत चित्त है, प्रेम स्वरूप है, ब्लिस आनंद स्वरूप है. इमेजिन, फील. माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपका पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगा, आपके अच्छे सीक्रेशंस हार्मोन के होंगे. दैट्स हाउ द ब्रेन इज डिजाइन्ड. जस्ट बी वन विद दिस रियलिटी. Hypnotize yourself. I am the best person on planet Earth. Acknowledge yourself. For all the shortcomings that I have, it's okay. But still, I have a lot of self-respect. I accept myself the way I am. I have a lot of positive qualities, a lot of things that people appreciate. I acknowledge it. Medical profession is one of the best profession I could have chosen. I could choose in my life. Thank God that there are so many people who come to me and I provide them little comfort and solace and make them pain free. कितनी दुआएं मिलती है मुझे. 24 घंटे, 12 घंटे बिना नींद किए, लेकिन मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, खुश हूं अपने आप से, विदाउट एनी टर्म्स. खुश हूं अपने कलीग से,
खुश हूँ अपने भाग्य से, खुश हूँ माता पिता से जिन्होंने मुझे यहाँ तक बड़ा किया, खुश हूँ अपने टीचर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे सीनियर्स से, तो शायद मुझे प्रेशर देते हैं लेकिन मेरी भलाई के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मुझे और रेजिलिएंट बनाने के लिए। सबके लिए दिल से धन्यवाद। माई लाइफ is one long happy holiday. And in the way, I give all my troubles to the Almighty. And God is always there with me. Feel करें बच्चों, भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान। और वो मुझे कह रहा है, बच्चे चिंता नहीं करो, तुम्हारा जीवन सफल है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सफल भाव। Peak performance comes easily to you. This is what I am doing my mental imagery. I am loved and respected by everyone. Feel करे बच्चों, I am leading a fulfilled, meaningful, purposeful life. भगवान मुझ पे नाज करता है। वो कह रहा है, मेरे मीठे बच्चे बस खुश रहो, खुशी से, ब्लिस से हर कर्म करो। फिर देखो, तुम्हारा जीवन का हर कर्म, उसका परफॉर्मेंस will help you achieve the desired result. With a deep sense of gratitude to the Almighty, a deep sense of gratitude to my parents, my teachers, my well-wishers, my colleagues, the patients, my own destiny, I come out of this sacred space, slowly open my eyes, come out of that sleep and that dream stage, and I become fully aware that in this world, my responsibility as a doctor is to help people alleviate their pain and suffering and worry. And I feel confident that I'll be able to do this performance in the best possible way. दोनों हाथ को रब करें, my dear friends, अच्छी तरह रब करें अपने फोरहेड में, आंखों में, गाल में, नाक में, लिप्स में, चीक में, चिन में लगाएं। वंडरफुल। ये है स्पिरिचुअल फेयर एंड लवली। वो तो बहुत लगाया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, अभी तक तो मैं गोरी नहीं बनी। स्पिरिचुअल फेयर एंड लवली लगाने से भले गोरे हो नहीं भी हो, लेकिन आपके चेहरे की चमक, आपके अंदर के यहाँ से वाइब्रेशन, मुस्कुराहट सबके दिलों को छुएगी। Thank you. Om Shanti. Good night. Once again, putting on record my sincere thanks to the organizers, to the anybody. I mean, everyone who was part of the chairpersons, conveners, coordinators. I really enjoyed interacting with you. I hope the same at your end. Thank you. Om Shanti. Good night. Just wait for few instructions. I mean, just one more. Next week, you have another session from Professor EV Swaminathan. Not next week. It is after 2 weeks. 25th May. Yeah, 25th May. Yeah. Mind Matters, Harnessing Inner Strength for Outer Success. Oh, he's a gem of a person. He is a doctor in emotional intelligence. He has umpteen degrees. I mean, travels worldwide. जितना आपने ये क्लास एंजॉय किया, उससे 4 कदम ज्यादा आप एंजॉय करेंगे। तो प्लीज join in on 25th May, same time, Sunday, 9 to 10, and hoping that you will have a wonderful session. Wonderful. Thank you. So the Yes. very young doctor is listening to you. The small one. Who is that? Aarti's son. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. Where is he? Oh my God. Oh my. Shuchi. Oh, Actually, she's not well. She's running her. oh. That's okay. That's okay. कोई बात नहीं. Yeah, She was with me during the session. उनको अभी से धूजू आ जाएगा, फूफू आएगा,
डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा देंगे, पुलिस आएगा, प्लीज गलत हिप्नोटाइज नहीं करिए, ठीक है ना। वो खाना नहीं खाएगी, नहीं सोएगी, नहीं पढ़ेगी, सब चलता है। डर अगर चला गया तो गड़बड़ है, इनसिक्योरिटी अगर चली गई तो गड़बड़। आई डिड नॉट टेक मच टाइम ऑन दैट, बिलीव मी फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ challenges is nothing but lacking lot of self esteem and self respect. मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर आरती बहन, Thank you. गॉड ब्लेस। Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Om Shanti. Thank you, Shubhada ma'am. ओम शांति। Thank you so Thank much. you, sir. ओह वाह, शुभदा बहन बोलिए। Lekhi will take over. Yeah. ओह सॉरी। Thank you so much, Professor Girish. I'm sure everyone agrees when I say this has been a really thought-provoking session for tonight. And now, as we near the end of this insightful session, it is my privilege to invite our distinguished chairperson, Dr. Shuchi ma'am and Dr. Anuja ma'am, for closing remarks. We deeply value your leadership, ma'am, and we look forward to your reflection on today's discussion. Thank you, sir. It was certainly a very thought-provoking session. I think it will go a long way in helping our residents to come out of the stress they face day to day. And we are really grateful to you for this talk and taking out your precious time. So we hope we remain a part of this series for all the upcoming lectures. Thank you, sir. Dr. Anuja is there. Okay, meanwhile, Sejal, you can request our conveners. I invite Dr. Alka, our convener for today's program, for her closing remarks. Over to you, ma'am. Ma'am, you're not audible. Kindly check your network, please. Maybe you can switch off your video and then talk. Just switch off your video. Maybe the net connectivity is little low. It was really thought-provoking session. All the points touched, self-hypnosis, I like the most, and Pygmalion effect, and the books you recommended. I think they will go a long way to help our residents. Okay. Okay, Lekhi, you can invite our other coordinator for the the vote of thanks and the the announcements. So now, to formally conclude today's session, I now invite our respected coordinator, Dr. Lakshmi ma'am, to deliver the vote of thanks. Over to you, ma'am. As this session comes to a close, I'm honored to express heartfelt gratitude to each one of you for making MindRx mental prescriptions for peak performance a resounding success. On behalf of the organizing team, I thank Professor EV Girish for sharing enlightening insights and practical tools for mental clarity and peak performance. Thanks for the insights regarding how to be satisfactory. Your words have inspired and energized us, offering valuable wisdom for our demanding lives as medical professionals.
Special thanks to our esteemed chairpersons, Dr. Shuchi Jain and Dr. Anuja Bhalerao, for their unwavering support and encouragement. We are grateful to our conveners, Dr. Alka Patankar, Dr. Shubhada Neel, and Dr. Aarti Chitkara, for their dedication and tireless efforts. We appreciate the meticulous work of our coordinators, Dr. Lekhi Pandilwar, Dr. Sejal Neel, and Ms. Monisha Arora. We thank our resident doctors for their enthusiasm and active participation despite their busy schedules. We appreciate the faculty members for motivating students and supporting this initiative. Moving forward, we have a couple of announcements. You are requested to attend the upcoming webinar, which is scheduled on May 25th, titled Mind Matters, Harnessing Inner Strength for Outer Success. And we have as our resource person a luminary in the field of memory management, Dr. EV Swaminathan, a distinguished authority in the realm of memory management and a highly regarded corporate trainer. As a sought-after expert throughout India, we consider ourselves truly privileged to have him share his insights with us. We eagerly look forward for an enlightening session ahead, guided by his unparalleled expertise and fervent passion. We wholeheartedly welcome you for the same. Next announcement, fill the Google form to be a part of the support circle. Join WhatsApp group to receive updates. The WhatsApp group link and Google form link will be shared in the resident doctors group of the respective colleges. Also, the links have been shared in the chat box. Requesting you to please find the same in the chat box, copy the links and save it for future reference. Join and motivate others to attend session on every second and fourth Sunday, 9 to 10 p.m. Watch, like, and share the recorded version of this session, which will be uploaded in the Divine Garbhasanskar YouTube channel shortly. For personal counseling, please feel free to reach out to our coordinating counselors for guidance and support. Let's stay connected and be inspired on our journey of inner excellence. We look forward to welcoming you to our next session on May 25th, titled Mind Matters, Harnessing Inner Strength for Outer Success. Looking forward to meeting you. Thank you and wishing you peace, power, and performance ahead. Let's wind up the session in remembrance of God Almighty. Thank you. शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। Thank you once again. Lakshmi, you can end the meet. You can stop recording the meeting. Okay.